कौन सा वाला? वो मैंने कल आपसे पूछा था, क्योंकि सब लोग रहते हैं तो सेंड टू ए थर्ड हाँ पर्सन। हाँ, सब लोगों के सामने बिल्कुल बात कीजिए, बिना डरे। ओके। वो क्योंकि इट वाला, इज तो मुझे एवरीवन। समझ में नहीं आ रहा है कितना इन्वेस्टमेंट किस स्टॉक में करना है, ऐसा करके। और ये मेरा डाउट नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का डाउट है, मतलब। करेक्ट करेक्ट। तो ठीक मैंने है। कल आपसे पूछा था, क्योंकि सब लोग रहते हैं तो सेंड टू ए थर्ड हाँ पर्सन। हाँ, सब लोगों के सामने बिल्कुल बात कीजिए, एक बिना मिनट डरे। ये मेरा लाइव शुरू हो गया वो है। वाला। हाँ। ओके। हम्म। ग्रेट। सो वो वाला टॉपिक कि जब मैं स्टॉक खरीदती हूँ, आपने कहा कि जब आप छोटा अमाउंट खरीदते हैं तो बहुत बढ़ जाता है, जब बड़ा अमाउंट डालती हैं तो फिर वो अटक जाता है। ऐसा क्यों होता है? राइट, सो लेट मी जस्ट। नहीं, ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है स्टॉक्स पे। जैसे कुछ स्टॉक्स अपर सर्किट में जा रहे हैं, ठीक है, हाँ। तो हमें थोड़ा डर रहता है कि अगर पैसा अटक गया तो, लोअर सर्किट स्टार्ट हो गया तो वहां पे हम इन्वेस्टमेंट कर कम कर पाते हैं, हम्म बजाय कि स्टॉक ग्रो कर जाता है 15-20% से। करेक्ट। और हम्म। जो हम अच्छे स्टॉक्स लेके चलते हैं, उनमें क्या हो रहा है कि वो उतना ग्रो नहीं कर रहे हैं, और जब मार्केट गिरता है तो वो नीचे भी बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा नीचे आ रहे हैं। ओके। तो उनमें पैसा ज्यादा है तो फिर लॉस भी ज्यादा दिखाते हैं। जैसे करंटली मेरा पोर्टफोलियो अभी अराउंड 15,000 का लॉस दिखा रहा है, फॉर सम 1,90,000। हम्म। सो और ऑल्दो व्हाट? अच्छा प्रॉफिट बुक किया है मैंने, बट स्टिल आई एम इन नेगेटिव। बुक नहीं किया है मैंने लॉस अभी। हम्म। ओके, लेट मी ओपन वन ऑफ माय पोर्टफोलियो। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर नहीं किया है अभी, एक मिनट में करता हूँ। जी सर। कहाँ गया स्क्रीन शेयर? एक मिनट, हाँ, ओटीपी डालता हूँ। जी सर। ये जो मेरा पोर्टफोलियो है बहुत ही खराब चल रहा है। ओके। ये है, इसमें कितना डाला है हमने? कहाँ गया रिपोर्ट? ओके। 2,28,000 डाला है, 910 रुपया वैल्यू। बट मार्केट वैल्यू घट के हो गया है 21,000, कम हो गया है। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही दिख रहा है। हाँ। तो इसमें क्या हो गया कि आपका, आपने जो सवाल किया ना, एग्जैक्टली वही हुआ मैंने। तो उस वक्त जो है थोड़ी ग्रीड और ये आ गई थी। अभी 63 मून जो है, ये डबल हो गया था। हाँ, 100% हो गया था, लेकिन मैंने बेचा ही नहीं। तो अभी घट के 55% हो गया है, तो लॉस हो गया। ये वाला शेयर है बीसीजी, ब्राइटकॉम ग्रुप। आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू ग्रो ग्रो ग्रो, डबल डबल डबल। इट इज नॉट ग्रोइंग। इसमें कितने पैसे लगे हैं? इसमें बहुत कम पैसे लगे हैं, करीब 17,000 रुपये लगे हैं, है ना। प्रोटीन अभी रिसेंटली खरीदा है। उस दिन जो था, ये बहुत ही अच्छा शेयर है, लेकिन उस दिन क्या था, थोड़े पैसे कम थे, तो 10 ही शेयर खरीद सके। तो अभी अटका हुआ है। लेकिन जो अच्छे शेयर थे, यस बैंक, यस बैंक में मैंने बहुत उम्मीद लगाया, थोड़ा ज्यादा पैसे लगेंगे। लेकिन मेरा सबसे ज्यादा जो दुख होता है वो है एसकेएम एग। इस कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। इसमें मैंने पूरे 50,000 डाल दिए। 49,312 का इन्वेस्टमेंट है, जो आज घट के हो गया है 37, 24% घट गया है। बिरला केबल में 10 ही शेयर है, -22। त्रिवेणी शुगर, ये बहुत प्रॉमिसिंग था, इसमें मैंने 38,000 डाले थे, आज 33 पे चल रहा है। और चौथा है ये वीनस पाइप, इसमें भी 30,000 डाले थे, आज ये 9% कम चल रहा है। लेकिन इट डजेंट मीन दैट दीज स्टॉक्स आर बैड। इसको इन्वेस्ट करके भी 3 महीने भी नहीं हुए हैं। सो व्हेन यू लुक एट द फंडामेंटल, सो दैट इज व्हाट द आपका जो प्रश्न है ना, कि जब मैंने ये खरीदा तो मैंने एमएसीडी देखा? बिल्कुल नहीं देखा। बॉलिंजर बैंड देखा? बॉलिंजर बैंड बोला इस वक्त बेचने का टाइम है, आप खरीद क्यों रहे हो?
RSI बोल रहा था इस वक्त तो बेचने का टाइम है, आप खरीद क्यों रहे हो? लेकिन स्टॉक जो है एकदम स्काई रॉटिंग, किसी स्काई रॉकेटिंग, किसी फाइटर प्लेन की तरह एकदम ऊपर जा रहा था आकाश में। तो ग्रीड हो गई, अरे मैं मिस कर जाऊंगा, और उसके बाद 2-3 दिन देखा नहीं तो स्टॉक गिर गया। तो ये जो है, ये है इमोशनल परचेज। So in the stock market, we have to develop the habit. I was reading a beautiful book today, and he talks about, he was talking how to train yourself in stock market. Let's take a free. Is it how to train yourself? बोलता है स्टॉक मार्केट में ना कोई किसी का कंट्रोल नहीं है। इमोशंस आर वेरी हाई, नंबर वन। नंबर टू, मोर यू सिट ऑन टर्मिनल, लेकिन अपने कंप्यूटर के सामने आप स्टॉक मार्केट चालू है, और जितना आप देखोगे उतना आपका लॉजिक जो है वीक होने लगता है। ओके, एंड वी बिकम मोर इमोशनल एंड टेंड टू बी इमोशनल। एंड देन फाइनली क्या होता है, एक अचानक विचार आता है। फाइनली यू आर ड्रिवन बाय सिंगल थॉट, ड्रिवन बाय अ सिंगल थॉट। व्हाट इज दैट? व्हाट इफ आई lose this opportunity? So it has become FOMO, fear of missing out. SINGLE, sorry. Hmm. So ये जो है सारे इश्यूज हैं। तो इसमें अगर आपको, जब भी आपने इस तरह का ये किया है इन्वेस्टमेंट, जैसे मैं भी फंसा हूँ, इट इज इट्स नॉट दैट प्रमोद देशमुख इज expert or something. Where is my portfolio gone? Sorry. Yeah. Where is the portfolio? Here. ये जो एसकेएम फूड खरीदा हमने, तो ये एसकेएम एग बहुत ही बढ़िया शेयर, वेरी नाइस, एंड इट विल, आई कैन गारंटी यू दिस 490, नो 49,000 विल बिकम 1 crore, 1 lakh in coming few months. Let's see why. Let's go to the screener. Now coming back to the slide, we'll cover this slide also. So he is saying how to train yourself. What did I do? Okay, driven by. Okay. So the problem you are saying is, how do I train myself in stock market? Hmm? Here is the uh, point number one. Train like a pilot, or train like a surgeon. सर्जन की स्पेलिंग सही है क्या? Surgeon. What? How the pilot is trained? Moment pilot sit on the cockpit, hmm, he is not given the control of. He is not given pilot training image. He is never given the control कि भैया ले उड़ा ले plane, है ना? First he has to sit with a senior person and complete say 8,000 hours, 3,000 hours, 8,000 is very big number, 200 hours, 300 hours, and he has to read the manual for the captain again and again and again and again. ओके, सो उसमें क्या होता है, तब जाके उसका जो है दिमाग में थोड़े थोड़े वो बातें जो है बैठने लगती हैं। सो सेकेंडली, सर्जन सिमिलरली इन हॉस्पिटल, सर्जन ट्रेनिंग, ओके, even similarly same thing happen in hospital. This picture is good. Surgeon, you don't, the juniors just have to stand there for month. First year is listen and follow, become like a slave, just follow the instruction, do this, do this. If you're very lucky, if you're asked to touch some part inside the operation when the operation is happening, by the end of the year you are allowed to do some sutures, टाके लगाना आपको बताने सिखाने लगते हैं वो,
Second year you are given something, third year you are given something. But in stock market, what he says is there is no nothing. But we have to train like this. So the rule number one is, so for in stock market, the rule number one is trade small, and trade frequently. यही आप कर सकते हो। अगर आपके पास कोच नहीं है, गाइड नहीं है, तो ट्रेड छोटा रखो, 2 शेयर खरीदो, 1 शेयर खरीदो, और ट्रेड फ्रीक्वेंटली एंड डेवलप अ विनर एटीट्यूड, कि मैं 11% पे ही खेलूंगा, 11% पे निकल जाऊंगा, एंड ऑनर योर गेम। तो सर बाय स्मॉल ट्रेड व्हाट डू यू मीन, लाइक 10% ऑफ माय wealth that I have or 5%? या 10% जैसे नहीं, इट इज नॉट अबाउट परसेंटेज, स्मॉल इज स्मॉल, स्मॉल इज लाइक बाय 2 shares, buy 2 shares of 10 companies and play. Keep playing, keep playing, keep playing. And then check every time while buying the share, honor the fundamentals. So today I will tell you what I did. Today I was buying some shares, no? So in that, what we did, I've deliberately added few columns. These columns are, is MACD okay? Is RSI okay? Is Bollinger Band okay? You know, तो वो कॉलम ऐड करने से मुझे क्या हुआ कि अभी नाउ आई नो दैट व्हाट काइंड ऑफ रिस्क आई एम टेकिंग। सो लेट मी शो यू हियर, लाइक दिस। सो आज खरीदे ये सब, तो इसमें क्या है, ये लुक एट दिस कॉलम, MACD ओके, he says yeah, yes, means the MACD signal is high and MACD is following, -7, MACD is 7.8 and my MACD signal is -9। यस यस, एक में नो था, एक में नो था, मतलब MACD is high and MACD signal is low, that means he's trending to sell green panel। बट ICICI ने बोला, प्रभुधर लीलाधर ने बोला, 2-3 लोगों ने अचानक ग्रीन पैनल को खरीद लो, बढ़ने वाला है, उसको उसकी प्राइस 480 टारगेट प्राइस दी है। तो मैंने कहा ठीक है, चलो ले लेते हैं। और इसका RSI भी ऊपर है और इसका बॉलिंजर बैंड भी ऊपर है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेड जो है, पायलट ट्रेनिंग और सर्जन ट्रेनिंग के हिसाब से देखेंगे तो ये आउट ऑफ लाइन है। यहीं पे डाउट क्रिएट हो रहा है। आपने इतने सारे स्टॉक्स निकाले, करेक्ट, इनमें हाँ इन्वेस्टमेंट डाला, तो आपने ये कैसे चूज किया अपने माइंड में दैट I'll purchase 23 shares of this and 150 of this, 168 of this? ये कैलकुलेशन कहाँ से हाँ, निकालते हैं? ये कैलकुलेशन क्या था कि आपने स्टॉक में 18,000 डाला है, एक में 25,000 डाला है, एक में 38 डाला है, एक में 24। 25, 22, 17, या, सो दिस इज, there is no discussion around this, actually there was no logic about it, this is the amount we had तो in एक्चुअली morning। यही चीज मेरे दिमाग में भी घूम रही थी कि हाँ। मेरे साथ क्या हो रहा है ना, जैसे मैंने टिप्स इंडस्ट्री में हम्म 1,07,000 डाला हुआ है, हम्म KPR मिल में अराउंड 40,000 डाला हुआ है, हम्म और ये अपने राजेश एक्सपोर्ट में भी अराउंड 35,000 डाला हुआ है। हम्म, ठीक है, और ये तीनों अभी डाउन में चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और जो स्टॉक्स अच्छे हैं, जैसे मैंने वो खरीदा था सुजलॉन का शेयर, करेक्ट, तो मैंने सिर्फ 100 स्टॉक्स खरीदे, 70% ग्रो किया, बट हम्म पोर्टफोलियो 1,000 रुपीज ग्रो हुआ बस। हम्म तो यहाँ पे आके मुझे मतलब थोड़ा ये फील होता है कि लर्निंग पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया, अभी मुझे ऐसा लगता है मे बी उसका इम्प्लीमेंटेशन मुझे ठीक से नहीं करना आ रहा। सो इट इज ऑलवेज अ मैटर ऑफ, थोड़ा सा उसमें लक तो है ही मैडम। अब जब व्हेन आई परचेज ऑल द स्टॉक्स लाइक हियर, ऑलमोस्ट 1.5 लाख इज नाउ स्टक। आई वॉज थिंकिंग कि अभी जैसे मेरा पैसा बाहर आ जाता है, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू सेल इन लॉस फॉर हम्म श्योर, तो जैसे ही बाहर आ जाता है देन आई थॉट कि आई विल मेक अ सेगमेंट ऑफ 25,000, लाइक 8 8 ब्लॉक्स। हम्म
and I'll keep on repeating those blocks only. जैसे 25,000 डाला, 11% हुआ, निकाल के किसी और शेयर में डाल दिया, ऐसे I'll play with 25,000 only. 25,000 से ज्यादा किसी भी मतलब स्टॉक में मत डालिए, करेक्ट। नहीं, ऐसे और करके। 11% का गेम खेलिए, 11%, 12% जो भी आपका नंबर है हम्म। उस पे निकल ही जाना है। हम्म, उस पे निकलना बहुत जरूरी है। और ये जो है, वंस यू स्टार्ट विन एंड दिस यू डिफाइंड एज विक्ट्री, ओके आई एम ए विनर बिकॉज आई अर्न 11%, दैट्स इट। Now, market, the book I am reading is so beautiful. It says the market is full of so much noise and we get hijacked with so much noise. इसका शेयर डबल हो गया, इसका ये हो गया, इसका वो हो गया, you know. But we have to focus on our game. Like a pilot want to learn a particular Boeing 737, so he will read only Boeing 737 manual till he master it. Or a surgeon is becoming, so, for heart surgery, so then he will focus only on heart. He doesn't look into ENT and other and stomach and cancer and all that. He focus only on that till we become. Final message was very clear. Till the behavior become automatic. पायलट के लिए वो ऑटोमेटिक बिहेवियर हो जाता है. Similarly, for surgeon, it become automatic. Okay, and this automatic we practice a lot in our morning. We vision achieve goal practice. We are trying to eliminate many automatic. कभी अभी हमारा ऑटोमेटिक क्या है, ये है वीकनिंग, इमोशनल. इसको धो के नया ऑटोमेटिक बनाना है कि आई एम सो अलर्ट इन माय बिहेवियर. So what are the things we covered? First is moment, emotions are generally very high at the time of buying and selling, so we have to become say, okay, this is just one of the game I'm playing. More you sit on terminal, the logic weakens. तो उस वक्त आपको एमएसीडी याद भी नहीं आएगा, उसको बॉलिंजर बैंड याद भी नहीं आएगा. एंड यू टेंड टू बिकम इमोशनल. कैसे जल्दी जल्दी पैसे बने, कैसे जल्दी बढ़े, ये एक थॉट जो है बहुत, इसका बहुत ही स्ट्रांग ड्राइवर फीलिंग आता है कि मतलब कैसे मेरे पैसे जब हम इतने दिन से एसबीआई लग से रहे. स्टॉक्स निकाल रहे हैं तो हमारे हाँ पास मिल आ रहा है अंदर से कि अब खरीद देते हैं, खरीद देते हैं, खरीद देते हाँ हाँ. अरे आज पैसे आ गए, चलो लगा दो लगा दो. फिर उस वक्त भी वो भी एक अलग इमोशन है. अरे मेरा स्टॉक में पेमेंट, मेरे मेरे बैंक में पैसे ऐसे ही अननेसेसरी पड़े हैं. व्हाई डोंट आई इन्वेस्ट इट, किस में लगा, चलो किसी भी में लगा दो. दैट इज ऑल्सो इमोशनल डिसीजन. हैं। यू नो, मिस्टर वॉरेन बफेट यूज्ड टू वेट फॉर मंथ्स एंड समटाइम years to wait and wait and wait and wait for a right opportunity. But nowadays, what happened? We are stuck in this news world and we are just putting money, right? He used to wait for months. He used to say no to hundreds of these because he was not driven by emotions. Of course, he is also an emotional person, but so fear of missing out is another emotion. So then, how do we train ourselves? We need to train ourselves like a pilot or like a surgeon. And in stock market, so they go through a very detailed program, and it's a very slow program of 1 year, 3 year learning. Similarly, we have to, create little bit um, structure in our training. In stock market, rule number one is trade small, but trade frequently. Trade in the sense, moment we are not doing daily trading. Morning, evening हम लोग नहीं कर रहे हैं, right? नहीं तो वो भी अलग धंधा है. We are doing investment from 45 days to 3 months. In that moment, you reach your 11%, you sell and buy immediately something else. And make this as your automatic behavior. इसको जब हम लगातार करेंगे, उसके बावजूद भी क्या सक्सेस फेलियर तो बिल्कुल हमारे हाथ में है नहीं. सो चलता रहेगा. ओके. Okay, could we discuss that? Could I answer your question? Are you getting some clarity? करेक्ट सर. अच्छा, Hmm. इसमें एक ये है कि जब हम अपर सर्किट वाला ये गेम खेलेंगे, ठीक है, जब Huh. वी इन्वेस्ट इनटू अपर सर्किट स्टॉक्स, देन व्हाट डू यू थिंक, लाइक हाउ मच रिस्क वी शुड टेक? So I'll give you two examples. Upper circuit. Can I close this? Okay. या So I'll give you two examples. suppose you can take like my total investment amount for stock market is 2 lakhs. Hmm. So if I'm investing in any upper circuit stock that is highly risky, so how much in investment should I do? I'll tell you.
you first write down the rule. And look for opportunity. Now, this upper circuit game is very, very dangerous game. Okay. Now, that's why we are stuck, right? So SKM egg. SKM egg, let's see. SKM egg, I purchased stock at the upper circuit only. Here, somewhere here. इसको भी 3 महीना होने आया. 500 के ऊपर ही खरीदा है. And today the stock is at 20% low. 490 पे लिया है ना कहीं तो भी समझ गया. Is the stock really bad? Is the company bad? Answer is no. The company is really good. And look at the future. Next quarter, अभी ये क्रिसमस का महीना है, right? दिसंबर का महीना है क्रिसमस. What they make? They make whole egg powder, egg yolk powder, egg albumin powder, all this thing. And this is used heavily in cakes and all this manufacturing, and they are 100% exporting to Europe and to US and all that. So what are they saying? Our last quarter was bad. So stock tanked. The sale is increasing from 176 crore to 337 crore. 92% increase. Operating profit is growing from 41 to 82. And net profit is growing from, my goodness, 28 to 70, 163% growth. Now this kind of growth is possible only if the market is very hot. And what is the logical reason for market to be very hot is the Christmas season, holiday season, right? People are traveling, people are meeting, they are eating, and eggs is a very, very common, food item for in the Western world. All that is happening. So, okay, ये नहीं हुआ तो कुछ तो बढ़ेगा तो जरूर, right? And therefore, this stock will recover very soon. And let's see what is their history. Their December quarter results and March quarter results are always good, right? And they have been consistently growing. So this time again, they will cross 210 and they will be back. Okay. So is the fundamental तो अभी क्या बेचना है, loss पे बेचना है इसको? Answer is no, don't sell it on loss. So this is one example which has gone wrong. Only thing is wait. So what has Warren Buffett said? You should select a stock which you can hold for lifetime. Sometime back, about almost 5-6 months back, we purchased Compton Greaves. Today, Compton Greaves has given a very positive signal, and Prabhudhar Leeladhar as well as ICICI Direct are recommending to now buy Compton Greaves. It's likely to grow 20-30%. Which stock, sir? Compton Greaves. Okay. Can we open? Compton Greaves, yeah. Even I also got 2-3 stocks, out of which one was like, since the time it is open, it is growing. There is no red candle in that stock. Which is that company? I'll tell you just. So we will be changing the topic. ये देखिए, ये क्रॉम्पटन ग्रीव्स है. ये इतना बहुत गिर गया था, फिर बढ़ा, ऑलमोस्ट 320 हो गया था. अभी ये वापस सिग्नल दे रहा है, it will grow by 30%. Okay. So some positive results are coming about Crompton. Even though these numbers are not looking so great, but yeah, the company is likely to increase its profit. Not there in this. So coming back to your question, Yasha, you said, we purchased SKM Egg. The another company is Jai Balaji. Jai Balaji, I was rising like crazy. And I purchased somewhere at here when it was rising here. 590 I purchased actually. Peak. उसके बाद stock tank हुआ. But then I stayed in that. Now past few weeks, suddenly it has shooted up. Within a month. In October में खरीदा था. अभी देखिए December end में वापस बढ़ गया है. So now 592. This is almost like 20-25% growth has happened. Jai Balaji. Again, it is flattening. But the management here, the people driving the stock, they want to push it to 1,000 plus or 1,500. Second stock I want to talk about is Anand Rathi. आनंद राठी का स्टॉक ऐसे ही बढ़ते जा रहा है. The
सर 11% ग्रोथ वाला गेम वी शुड प्ले. व्हाट अबाउट द 6% लॉस दैट वी डिस्कस्ड? शुड वी focus on that also, or we should not? No, we should not exit on loss any time because we have time on our side. So that's what the principle says. What is the principle? Warren Buffett says that when you buy a share, buy for lifetime. Hmm. In the lifetime of a share, it will go up and down, but then keep it for 3 years, keep it for 2 years, keep it for 1 year. But always have intention to exit in 45 days to 90 days. Correct. So this is what is Anand Rathi share. I had purchased almost at 21, 18, 1900 and it was at the peak. उसके बाद वो गिर भी सकता था. लेकिन these people are working and they have moved the stock to 26. अभी वापस थोड़ा ऐसा 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 हो रहा है. कुछ दिन में देखिए ये स्टेज यहाँ पे आ गई थी, उसके बाद वापस बढ़ा, अभी वापस इस स्टेज है, फिर से कुछ दिन में बढ़ेगा. तो देयर टारगेट इज अबाउट 3000. So coming back to the slide, train yourself the way pilot train themselves and surgeon train themselves. So in stock market, there is no control. For a pilot, there is direct commander sitting on his head. There is a captain sitting on his head who will not let him touch the manual also, right? Without his instruction, he cannot do. So pilots are trained very systematically. But we in stock market, we don't have anybody to control. So we become emotional and therefore we are losing money. So we have to put a structure in place. Structure is what? Discipline. Discipline structure. Rule number one, trade small, trade frequently, initially. And then develop a winner's attitude to exit at 11%. Now coming back to your, अभी आपका दिल कहाँ अटका है? आपका दिल अटका है वो राजेश एक्सपोर्ट में पैसे अटके हैं और यहाँ पे पैसा अटका है यहाँ पे. You follow Warren Buffett advice. You have purchased this stock for lifetime. 1 साल, 3 साल, 5 साल जरूर ऊपर आएगा. तो तो आई eventually- आई आई हैव दिस फियर नाउ कि जैसे मेरा जितना इन्वेस्टमेंट था स्टॉक मार्केट में वो अभी स्टक है काइंड ऑफ, ठीक है. हम्म तो अभी मेरे पास जो सेविंग्स बचती है, लाइक जो मैंने अपना एस्टिमेट लगाया था कि मुझे इतने फंड्स एफडी में चाहिए, इतना आरडी में चाहिए, वो मैंने अचीव कर लिया इस हम्म साल एंड तक. हम्म नाउ आई हैव अराउंड 20 to 25,000 per month, which is हम्म my savings. Okay. हम्म हम्म. So can I move those now into stock market? Yeah, you should. जैसे मैंने अप्रोक्स 5 lakhs अमाउंट जो है अपने बैंक अकाउंट में एज एन एफडी स्टोर कर लिया है. हम्म सो नाउ आई फील सेफ कि ठीक है वो अमाउंट मेरे पास है. हम्म So with my extra amount, like whatever I am able to save from my salary, 25,000, that I can directly put into stock market, and I want to like buy stocks and leave it. हम्म. So if you want to buy कर stock सकते हैं, बट and leave it, उसको करने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो पैसा है अभी वही मेरा डाउन है, ऊपर से नहीं. मार्केट ऑल टाइम हाई में है, तो मुझे नहीं नहीं करना चाहिए अभी. ऐसा फील होता रहता है. करेक्ट. तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? यू हैव टू गो फॉर दिस स्ट्रेटेजी which is called MACD. Sorry, not MACD. Intrinsic value lower than market price. Okay, so wherever the current price is lower than intrinsic value and the stocks are performing well, here we can create a wonderful strategy for long-term stock purchase. What should be the strategy? First, rule number one is current price should be lower than intrinsic value. You agree with that? यस सर. Okay, इन दोनों को निकाल देते हैं अभी शुरू में. Stock should be growing, right? Return over अभी इसको भी निकाल दो. चलो, stock should be growing और सब छोड़ दो. Company should be decently big, 700 crore my market share और 1000 crore रख लो इसको. You can make it 10,000 crore also. Let's make आई it थिंक 2,000. 500 इज ऑल्सो गुड नो, क्योंकि वो कंपनी अपनी ग्रोथ की स्टेज में होगी अभी. हाँ, लेकिन 500 करोड़ वाली कंपनी कभी गायब भी हो सकती है, इसलिए थोड़ा ठीक है. चलिए, नाउ द फंडामेंटल. अभी बिल्कुल फंडामेंटल फोकस करते हैं. सबसे देखते हैं पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो. पीई
प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना होना चाहिए? थियोरेटिकली कितना होना चाहिए? <1 लेस देन 12 होना चाहिए, लेस देन 1 नहीं होना चाहिए। ओके। हाँ, लेस देन 12 होना चाहिए। एंड कितना, आरओई कितना होना चाहिए? 25 के ऊपर होना चाहिए। 25 करेक्ट। हाँ, ग्रेटर देन 24 रख दो, चलो 20 कर दो। एंड डेट कितनी होनी चाहिए? चलो डेट छोड़ दो, डेट क्यों, क्योंकि डेट तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए डेट लगती है, लेकिन नेट प्रॉफिट जो है वो इट शुड बी ग्रेटर देन 50% ऑफ डेट। चलेगा? करेक्ट। ओके। और हम इसमें ये भी इंक्लूड कर सकते हैं ना कि कंपनी डिविडेंड देती हो और उसमें डीआईआई का एटलीस्ट 10% होल्ड हो। ओके, गुड, सो वेरी नाइस। सो एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट शुड बी, क्या है इसका पैरामीटर, रेशियो है 10%। 10%। एंड क्या है, डीआई है? एफआईआई डीआई का 10% एटलीस्ट होल्डिंग हो, मिनिमम 10%, मीन्स मोर एफ देन आई 10। आर डी आई प्लस होना चाहिए या ओनली एफ आई आर डी आई इस अलग पे? अलग अलग अलग। अलग अलग, तो इनको एक काम करते हैं, दोनों को मैं ऐड कर देते हैं। एफ आई डी आई होल्डिंग प्लस एफ आई आई होल्डिंग, दोनों को मिला के करते हैं ना, क्योंकि हमको इतना डिटेल में बता नहीं रहे। शुड बी ग्रेटर देन 20%। 20%। वेरी गुड। ओके, लेट्स सी, आई होप इट डजंट गिव एनी एरर। और कुछ? हाँ, आरओई, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, चलो, 6 स्टॉक मिल गए आपको। वाह, वाह, लगा दो पैसे। इज एनी कंपनी बैड हियर? यू नो ऑल ऑफ देम, राइट? यस सर। हम्म। एनएमडीसी। ओके, चलो इनको पढ़ लेते हैं। एनएमडीसी, कोल इंडिया तो आज वापस बढ़ गया। तो पहले सर दो दो कंपनी और है, उनको और देखते हैं, देन विल स्टार्ट इनटू दिस। ओके, चलो बताइए। डॉल्फिन। हाँ, डॉल्फिन। डॉल्फिन। डॉल्फिन ऑफशोर एंटरप्राइज, ये डॉल्फिन मेडिकल, डॉल्फिन होटल्स, डॉल्फिन इन्वेस्टमेंट। ऑफशोर एंटरप्राइजेज ये थे। ऑफशोर। Wait, I'll confirm once। 1200, 1232 का है शेयर। हाँ जी सर, 1232 का है। आज 2% बढ़ गया, 24 रुपये बढ़ गया, वाह। सर, आप इसका साइक वो देखो चार्ट सर, ये कंटिन्यूअसली ग्रोथ पे है ये कंपनी। वाह, लेकिन ये कंटिन्यूअस ग्रोथ पे है, लेकिन इसमें मैडम एक प्रॉब्लम देखिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये इसको देखना बहुत जरूरी है। यही तो हम पकड़े जाते हैं, नहीं तो। डॉल्फिन, क्या है इसका? डॉल्फिन ऑफशोर। हम्म। नहीं, कुछ और खुला है ना। डॉ- हाँ, डॉल्फिन, हमने कौन सा ऑफशोर एंटरप्राइज, यही है ना, डॉल्फिन ऑफशोर एंटरप्राइज। और इसका प्राइस अभी 1232 है ना सर। हाँ, एक मिनट, इनका थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये लोग क्या करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड सारी दुनिया भर की कंपनीज की इंफॉर्मेशन रखते हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा, कमान, डॉल्फिन इंडिया लिमिटेड बराबर। स्टॉक अभी भी स्प्लिट हो गया। स्प्लिट हो हाँ, गया। एक मिनट, ये देख लीजिए आपका चार्ट, फिर आपको समझ में आ जाएगा। टक 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 टक, वही है कंपनी, स्टॉक स्टॉक शेयर, यही है मैडम। तो मैंने ये पहली ऐसी कंपनी देखी है सर, इसका चार्ट देख के आई वाज वेरी शॉक्ड। हाँ, अभी अभी देखिए इसमें तमाशा क्या है, देखिए। कैन यू कैच व्हाट इज द प्रॉब्लम? यू आर स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, कम ऑन टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम। स्टॉक इज ग्रोइंग एवरी डे।
वेयर इज द वॉल्यूम? वॉल्यूम इज 16 शेयर्स। करेक्ट। एक्चुअली इसमें आई थिंक दो दो दोस्तों ने शेयर खरीदे और स्टॉक बढ़ा दिया। दो दोस्तों अपर, ने शेयर। इसमें जो अपर सर्किट में मुझे लग रहा है इट इज 2% ओनली, आई थिंक सो। हाँ, इसमें ये मनी कंट्रोल बताएगा, मनी कंट्रोल। वो तो जाल बिछा के बैठे हैं कि कब यशा आएगी और फंसेगी और वो डंप करके निकल जाएंगे, और आप 1232 पे आप नो अटक जाओगे स्टॉक लेकर। तो सबसे पहले वॉल्यूम देखना, सप्लाई डिमांड ऑफ स्टॉक देखना, कि जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो इस स्टॉक में इंटरफेयर क्यों नहीं कर रहे हैं। हम्म, आज कंप्यूटर बहुत स्लो चल रहा है। हाँ, इसमें आई थिंक एफ आई डी आई भी नहीं है, बट प्रोमोटर इज होल्डिंग अराउंड 80%। हाँ, तो प्रमोटर तो निकलने वाला है, ये तो आपका खूबसूरत वाला है। डॉल्फिन श्योर्स, वह 1232। ओके, इसमें अपर सर्किट है 1232, 2% पे उसने लगा दिया। बराबर, यू आर राइट। Some poor person has recently purchased how many shares? Oh my God. Let's enlarge this. यशा, आपके ऐसा किसी ने खरीद लिया इस स्टॉक को बेचारा। ओके, नाउ व्हाट डू आई डू इज, वेयर इज माय वॉल्यूम? अच्छा, वॉल्यूम बहुत ही कम है। वॉल्यूम दिख, इस एक कैंडल की वजह से वॉल्यूम जो है इसको ऐसा करो। वेयर इज माय वॉल्यूम? वॉल्यूम आ गया। ओके, एंड पिन टू स्केल ऑन लेफ्ट। ओके, यशा जी, आज इस स्टॉक में 1100 शेयर ट्रेड हुए हैं। ओके, 1183 शेयर ओनली ट्रेडेड। यस्टरडे 13,000। वॉल्यूम इज नॉट देयर एट ऑल। आज ये शेयर जो है नीचे से शुरू हुआ, ये वॉल्यूम थी भैया। लेट मी जस्ट रिन्यू ऑल दिस सर्विस। सर ये गलत आ रही है, ये ग्रीन कैंडल मेरे में नहीं दिखा रहा है, ये बड़ा वाला ग्रीन कैंडल। गैलरी दिखा रहा है ना ये। हाँ ये गलत है ये। लास्ट जो ग्रीन कैंडल दिखा रहा है ना, दिस इज नॉट हाँ। देयर ऐप, फोन ऐप। ओ, ओके, ये वाला नहीं है आपके इसमें ना। मे बी यू कैन ओपन दिस चार्ट ऑन हाँ, दिस दिस इज इकोनॉमिक टाइम्स। इकोनॉमिक टाइम्स। इकोनॉमिक टाइम्स में भी नहीं है। और इसका ये है डे। ओके, कैंडल हम डे डे वाली देख रहे हैं, एक दिन की कैंडल। ओके, इट्स नॉट मिनट और 5 मिनट 1 मिनट। समटाइम इट इज अ मिनट कैंडल, देन इट कैन बी 2 3 स्टॉक्स पर मिनट। बट हियर कैन यू सी द वॉल्यूम इज एवरी डे प्रैक्टिकली सो लो। बीच में एक दिन कुछ 1,36,000 शेयर किसी बंदे ने खरीद लिए, और उसके बाद क्या है, 16 16 16। दो दोस्त जो है सुबह आते हैं, एक एक दूसरे को बेचता है, अगले दिन दूसरा पहले को बेचता है, और अगले दिन पहला दूसरे को बेचता है, उसके अगले दिन इसको बेचता है। इसी तरह से ये लोग गेम खेल रहे हैं। डॉल्फिन ऑफशोर, हाउ मेनी शेयर्स दे हैव? दे ओनली 40 लाख शेयर्स। Oh my God. ROE is negative, ROC is negative, return on asset is negative, डेट 15 करोड़ है, लेकिन वो नेट प्रॉफिट दिखा रहा है 43 करोड़, जबकि उसका ईबिट है निगेटिव। उसको इंटरेस्ट देना है एक 1 लाख, 1 करोड़ 16 लाख, उसके लिए तो उतने पैसे नहीं है। टू गिव 1 रुपी इंटरेस्ट ही हैज टू बोरो फ्रॉम समबडी एल्स 99 पैसा। ये आपका खूबसूरत जैसा कंपनी है मैडम। सो वी आर नॉट सपोज टू टच दिस कंपनी। ओके, तो यहाँ पे अभी आप द सेम क्वेश्चन, शुड आई रियली इन्वेस्ट इन दिस? स्टे आउट, द इमोशनल पर्सन हैज टू स्टे आउट, राइट? इट्स अ बैड डील।
हाउ डिड यू गेट टू नो दिस कंपनी? आई थॉट इसका चार्ट आई थॉट विल डिस्कस। हाँ अरे वो मैंने आपको बताया था ना कि एक फ्रेंड है, दे आर प्लेइंग विद अपर सर्किट स्टॉक्स। हाँ, बस तो खतरनाक उसी ने खेल है। मुझको बताया। बिल्कुल, वो तो आपको डुबा देगा। नेटफ्लिक्स। So can you buy this stock for lifetime? If Warren Buffett says buy this stock for lifetime, what is the future of this stock? Oh my God, this is such a bad stock, right? Hmm. Dolphin Offshore. एक और है सर, S&S पावर। One second. S and S. हाँ, ये वाला एंड Switch नहीं gear. है सर, जो साइन होता है हाँ ना अपना, वो वाला दिस हाँ, वन, S दिस वन। and S power switch gear. Okay. 1975 में कंपनी बनी है। कंपनी पावर स्विच गियर बनाती है। स्विच गियर पता है आपको क्या है? स्विच गियर ऑन ऑफ स्विच है। ओके, जो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो जाता है, लेकिन बहुत ही हाई पावर वोल्टेज पे होता है, जैसे ट्रांसमिशन लाइन, जहां पे आप हाथ से ऑन ऑफ स्विच नहीं कर सकते। assume for some reason you cannot do switch on switch off, then you need a machine to go and switch on switch off, right? Automatically. So that is known as switch gear. So they are required in large transmission line. अभी इंडिया ने 1975 से लेके आज तक कितना स्विच गियर कंज्यूम किया रहेगा? The largest companies of switchgear are L&T, Siemens, Crompton Greaves, भारत बिजली, राइट। और ये बंदा जो है अभी भी 122 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, और इसका सालाना सेल जो है 175 करोड़। ही हैज नॉट अपग्रेडेड हिज टेक्नोलॉजी, सो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम ऑन दिस टॉपिक। 40 साल में दिस यूज टू बी ए पेनी स्टॉक, 15 रुपया, 25 रुपया। अभी इसके अच्छे दिन आ गए तो लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर दिया है। We have to stay out of this company. It is not meeting our requirement also, because market capital is very less, and a history of 75 years, this company has not gone. He should have a sale of 10,000 crore, not 175 crore, because switchgear market is huge, huge, huge. So तो let's सर keep. ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर कौन रहा है सर फिर? हाँ देखिए ना, अभी मार्केट में कितने लोग हैं, करोड़ों लोग हैं ना। अब बहुत से लोग जो है किसी की एडवाइस पे करते हैं बेचारे, तो फंसे हैं वो। SNS पावर, इसका वॉल्यूम कितना है, यहाँ वॉल्यूम देख लेते हैं हम लोग। देखिए आज का वॉल्यूम है 152 शेयर आज ट्रेड हुए हैं, और स्टॉक 180 पे पहुंच गया है। 150, 2000, 2000, 16,000, 2000, 12,000, वॉल्यूम देख रहा हूँ मैं सिर्फ। 27,000, 28,000, 7,000, 1,000, 16,000। बहुत कम वॉल्यूम है। और हमारा प्रिंसिपल क्या है कि जिस स्टॉक में वॉल्यूम 1 लाख से कम है दिन का, उसको तो देखो ही मत। कम से कम 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख वाले वॉल्यूम पे खेलो, राइट? सो वी नीड टू ऐड वन मोर थिंग यार, एंड वॉल्यूम। ओके, you can say 1 month average volume also should be greater than 100,000. You'll still get the same 5 companies, वही कंपनी आएंगी, है ना? क्योंकि ये बड़ी कंपनीज है, इनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। जस्ट अ मिनट यशा, आई विल टेक कपल ऑफ सेकंड हियर। जी सर। Yasha, just give me a couple of seconds. I had to complete a task right now. कोई नहीं सर, कोई नहीं। Hmm.
बस 2-3 सेकंड और। अरे ये क्या हो गया? हम्म, ये what do I do? Yeah, sure. Just couple of seconds. I need to stop. Hmm. Okay. It's okay, sir. If you want, we can continue tomorrow. Because Yeah, we we can booked continue you. tomorrow if you don't mind. Okay. Yeah, Hmm. yeah. Okay.